हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनप। दोस्तों आज मैं रिविजिट करूंगा एक क्लासिक इंग्लिश फिल्म जिसका नाम है नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। 2007 में रिलीज हुआ फिल्म है। दोस्तों व्हाट अ फिल्म यार, व्हाट अ फिल्म। व्हाट एक्शन सीक्वेंसेस, व्हाट अमेजिंग स्क्रीन प्ले, व्हाट डायरेक्शन, व्हाट एक्टिंग, व्हाट सिनेमाटोग्राफी। सिनेमाटोग्राफी बाय रॉजर डीकिंस, डायरेक्टेड बाय द कोएन ब्रदर्स। एंड एक्टर्स है हैवियर बार्डेम, जॉश ब्रॉलिन यानी हमारे थैनोस, एंड टॉमी ली जोन्स। दोस्तों सुपर फिल्म। एक्चुअली आप स्टोरी देखोगे ना, स्टोरी बेहद सिंपल है। एक ऐसा स्टोरी जो कई सारे फिल्मों में एक्सप्लोर किया गया है। इनफैक्ट लूटकेस नाम का फिल्म जो अभी रिसेंटली रिलीज हुआ था हॉटस्टार पर, वही सेम स्टोरी है नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन में। लूटकेस में क्या होता है, कुणाल खेमू को एक बैग मिलता है विच इज फुल ऑफ मनी, और दैट बैग बिलोंग्स टू अ पॉलिटिशियन। और कुणाल खेमू वो बैग लेके निकल जाता है और सभी लोग, पॉलिटिशियंस, पुलिस वाले, सभी लोग कुणाल खेमू के तलाश में जिनके हाथ में वो बैग है। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन में क्या होता है, जॉश ब्रॉलिन को एक बैग मिलता है जिसमें भर भर के पैसा है। दैट पैसा बिलोंग्स टू अ ड्रग माफिया। अब ड्रग माफिया, एक हिटमैन, बाकी सारे लोग भी तलाश में है जॉश ब्रॉलिन को, क्योंकि जॉश ब्रॉलिन के कब्जे में है वो बैग। तो स्टोरी बेहद सिंपल है, बट इट इज द स्क्रीन प्ले, द एक्शन सीक्वेंसेस। और एक्शन सीक्वेंसेस में म्यूजिक बिल्कुल नहीं है दोस्तों। दैट इज एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ शूटिंग इट यार, दैट क्रिएट्स लॉट मोर टेंशन। एंड प्लस द अमेजिंग स्क्रीन प्ले, द अमेजिंग डायलॉग एक्सचेंजेस इज व्हाट रियली कीप्स यू हुक्ड एंड बुक्ड। एक्सट्रीमली वेल डायरेक्टेड। दोस्तों मेरे को पता नहीं ये फिल्म कहाँ पर अवेलेबल होगा आज के तारीख में देखने के लिए, लेकिन यूट्यूब पे इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस है विच इज वर्थ रिविजिटिंग यार। सबसे पहले तो लेट मी टॉक अबाउट द इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस यार। म्यूजिक नहीं है, unbelievable. There is absolutely no music when the action sequences happen. The only thing that you get to hear is the heavy breathing, the sound of the bullet leaving the gun, the subsequent explosion, and ultimately the cry, the pain of the victim who gets hit by the bullet. अमेजिंग इम्पैक्ट यार, अमेजिंग इम्पैक्ट। और एक्शन सीक्वेंसेस में हैवियर बार्डम का एक्शन सीक्वेंस, वो पहला सीक्वेंस देखना व्हेन ही किल्स अ पुलिस ऑफिसर। वो सीक्वेंस अवेलेबल है यूट्यूब पे। क्या शूट किया है यार, और एक्सप्रेशंस क्या है बोथ ऑफ द पुलिस ऑफिसर एंड हैवियर बार्डम की आंखें देखना, ब्रिलियंट एक्सप्रेशन यार, अमेजिंग। दूसरा एक्शन सीक्वेंस में ही गोज एंड किल्स अ कार ड्राइवर टू स्टील हिज कार. He uses something called as a cattle gun. I've never seen that before, but yeah, it's an interesting tool, interesting weapon that was employed in this film. And the way he shoots him, first he smiles at him, asks him to step out of the car, and then says stay still, and then aims the cattle gun and khatak, the man is dead, man. What? It is so unbelievable because as the audience, you just don't know what is going to happen, and the way it is done by Javier Bardem with that simplicity, that coolness, that calmness, you won't even believe that there is something absolutely tragic that is going to be unveiled by him, launched by him within a matter of few seconds. And that is the brilliance of that scene here दोस्तों। उसके बाद जॉश ब्रॉलिन के साथ जो एक्शन सीक्वेंस होता है, it is brilliantly shot. One of the most scariest, one of the most intense sequences that I have watched till date. Absolutely no sound. Josh Brolin is sitting inside a dark room in a hotel. The only light that you can see is दरवाजे के नीचे जो गैप होता है वहां पे थोड़ा जो लाइट मिलता है वो दिखता है, और लाइट के वहां पे you can get to know that someone is pacing around, and that someone is Javier Bardem, the hitman who has come to kill Josh Brolin. उसके बाद खटाक, once sound of the bullet emerging out of the gun and then hitting the door, and then Josh Brolin firing, और उसके बाद जो खट 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 जो एक्शन सीक्वेंस होता है, brilliantly done यार, brilliantly done। और उसके बीच में a man getting killed। दोस्तों I'm actually revisiting all the sequences while doing this review because it is so brilliantly done that you have to see it to believe what I'm saying here. It is so brilliant, so engaging that I have absolutely no words. Extremely intense action sequences with no music creates one of the greatest impacts on the minds of the audience that I have known till date. It is brilliantly done दोस्तों। उसके बाद dialogue delivery, again Javier Bardem really rocks. Psychotic villain here, one of the best villains that you will ever get to see। वो जब शॉपकीपर के पास जाके उसको इंटिमिडेट करता है, और जब उसको पूछता है यू टेल मी फ्रेंडो इज देयर समथिंग रॉन्ग, और फिर टॉस उड़ाता है, या फिर वो जाड़ी के पास जाके जब वो डायलॉग एक्सचेंज करता है वो पूछता है वेयर डज ही वर्क, वेयर डज ही वर्क, वेयर डज ही वर्क। इट इज साइकोटिक विलनी एट इट्स वेरी बेस्ट। चाहे उनका हेयर स्टाइल हो, उनका स्माइल हो, और जिस तरह से वो किसी को इंटिमिडेट करता हो, it really will shake you, it will make you very scared, and that is the exact intention of that particular character which हैवियर बार्डम हैज डिलीवर्ड परफेक्टली वेल। ऑस्कर मिला था उनको इस रोल में। टॉमी ली जोन्स एक अलग तरह का किरदार निभाते हैं, एंड ही इज एक्चुअली the kind of what do you call the hinge that holds both these actors together, or both the storylines of Josh Brolin and Javier Bardem together.
यार एंड में इतना डिसइल्यूशनड हो जाता है टॉमी ली जोन्स की, वो मतलब छोड़ ही देते सब कुछ यार. दैट इज एन इंटरेस्टिंग टच. ऑन वन हैंड देयर इज इंटेंस वायलेंस हैपनिंग, ऑन द अदर हैंड देयर इज अ लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर, a police officer, a sheriff who doesn't want violence, who doesn't like violence, who doesn't believe in gunfights and stuff like that. It's an interesting twist provided, it's an interesting angle provided to the entire story. But having said that, Thanos भी नहीं, Tommy Lee Jones भी नहीं, it is Javier Bardem who walks away with maximum credit, especially that end sequence, what happens with him in the climax, that is again very very disturbing but very neatly done. Also, but दोस्तों जाकर देखो YouTube पे clippings हैं, but I don't know where you will get to watch the entire film. If you get to watch the entire film, you will absolutely love it. बहुत सारा Oscars भी मिला था, I think Best Picture, Best Director, Best Supporting Actor, and I think one more Best Adapted Screenplay if I am not mistaken. Perfectly well deserving. I will give this film 4 stars. Extremely well directed and very well made film with a very simple story. The treatment really deserves 4 out of 5 stars. For the moment, this is Sonup saying Tata.